औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हम अपना जो कंटिन्यू लेक्चर है वो है इंडस्ट्रीज, और आज हम इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे दैट इज कोल इंडस्ट्रीज। कोल इज कम फ्रॉम द माइंस विच इज सीम्स अंडरग्राउंड, और ये सीम्स जस्ट लाइक आर देयर। और पाकिस्तान में जो कोल माइंस हैं और वो सीम्स की जो थिकनेस है तो लेस देन 1 मीटर होती है। दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा होती है, बट इन पाकिस्तान इट इज लेस देन 1 मीटर, जिसकी वजह से माइंस बनाने में बहुत मुश्किल होती है। माइंस वर्कर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और समटाइम बहुत ही डिफिकल्ट जो है वो सिचुएशन के अंदर जो है वो माइंस वर्कर काम करते हैं। ये पाकिस्तान में जो कोल की एक्सट्रैक्शन है या माइनिंग है वो 1887 से शुरू हुई है, और वो दैट इज अराउंड सो रेंज विच इज अराउंड कोयटा। तो नियर कोयटा के अराउंड जो माउंटेन रेंज है दैट इज कॉल्ड सो रेंज, और वहां से एक कोल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में लोअर सिंध में कोल की बहुत बड़े रिजर्व हैं, और जहाँ से ये कोल जो है थ्रू ट्रेन जो रिक्वायर्ड एरियाज हैं जहाँ इसका यूज होता है, यहाँ रिफाइन होता है, और फिर जहाँ से आगे फर्दर वो रिक्वायरमेंट होती है कोल की वहाँ जाता है। इस तरह से कोल थ्रू माइंस से जो है रिफाइनिंग एरिया या उसके यूजेज एरिया तक जाता है। कोल जो है वो पाकिस्तान का जो 50% प्रोडक्शन है वो लोअर सिंध से मिलता है, और उसको जो प्रोवाइड करता है वो लोअर सिंध है। पाकिस्तान जो अपनी कोल की रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 50% जो है वो लोअर सिंध की कोल फील्ड से जो है वो पूरा करता है, और यहाँ हिमपीर, लाखड़ा और ठट्टा के करीब कोल्स के बहुत बड़े रिजर्व हैं, और यहाँ पे काफ़ी अरसे से और पाकिस्तान को एक बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं एरिया से कोल में फुलफिल की जाती है। इसके अलावा अगर हम फर्दर जो बदीन से आगे हम डेजर्ट एरिया है, जो थर का डेजर्ट एरिया है, अगर हम वहाँ पे कोल का एक बहुत बड़ा जो है रिजर्व डिस्कवर हुआ है, 1992 में डिस्कवर हुआ था, और 6 लार्जेस्ट कोल रिजर्व है वो। और यहाँ पे जो है वो ओपन फील्ड है, यानी माइंस नहीं बनाई जाती यहाँ पे। कोल क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, डीप अंडर द ग्राउंड नहीं है, वो ओपन फील्ड में ही जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ट्रक्स में भर के, और फिर वो फर्दर आगे प्रोसेस के लिए जाता है, रिफाइनिंग के लिए जाता है। वहीं पे उसकी कोल रिफाइनरीज हैं और वहीं पे वो रिफाइन होता है। इस तरह को पाकिस्तान में जो एस्टिमेटेड कोल माइंस हैं वो कोई 190 बिलियन टन जो है वो एस्टिमेटेड कोल रिजर्व है, जिसमें से हम 44 मिलियन टन जो है वो अब तक एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। अच्छा, लोअर सिंध में जो या थर में जो कोल माइंस है वो कोल फील्ड है, थर कोल फील्ड जो है वो है तो बहुत ज्यादा, यानी 6 लार्जेस्ट जो है कोल रिजर्व है, बट उसकी कोल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, और इस कोल में कार्बन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से वो सही तौर पर बर्न नहीं हो पाता। ये एक उसकी जो बैड लक है पाकिस्तान की, क्योंकि अभी वो सही तरह से मेच्योर नहीं हुआ, और अभी भी उसको साइंटिस्ट कहते हैं कि मिलियंस ईयर उसको मेच्योर होने में चाहिए। इसके साथ उसमें जो है सल्फर की जो है वो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो स्मोक जो है वो ज़्यादा देता है, और जब वो उसको बाहर हम निकालते हैं, ओपन एयर में वो कोल आता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह, लेकिन फिर भी ये कोल बहुत सारे साइंटिस्ट इसके तरीके निकाल रहे हैं कि किसी तरह से इस कोल रिसर्च को जो है वो हम अपने यूज में लाएं या एक्सपोर्ट करें। इस तरह से ये एक्सपोर्ट हो रहा है, चाइना यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है,
एक बड़े चाइना पूरी कोल फील्ड में जो है वो थर्ड कोल फील्ड में कोल को एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट है, और चाइना इसको निकाल रहा है और यूज भी कर रहा है, और हमारे पर्सनल यूज में भी वो आ रहा है, बट दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी अनफॉर्चुनेटली। और ये जो है नॉर्मली ब्रिक लाइनिंग के लिए जो है वो यूज होता है। इस तरह से आज हमने पाकिस्तान की जो कोल माइनिंग है उसको ब्रीफली डिस्कस किया, और आज की वीडियो में आप जो डेवलप्ड एरिया में एक कोल माइन किस तरह से काम करती है, आप फर्दर उसको जो है इस लेक्चर में देख सकते हैं। And here, just 30 miles from the city, are the Bailey and Enlow Fork mines. This is the largest underground mining complex in North America, and every year it produces more than 20 million tons of coal. There are millions of dollars invested in this vast complex, and with more than 200 men working underground at any one time, keeping it running is a major logistical challenge. At 4 in the afternoon, the day shift clocks off after 8 hours of hard work, while the next shift makes its way into one of the lift cages to begin the 650-foot descent into the mine. Mining is one of the toughest jobs imaginable, and there's an unspoken bond between these men who spend every working day deep underground. Once they arrive at the bottom of the shaft, they still face a long journey to the coal face. After almost 20 years of continuous mining, a vast network of underground tunnels now extends for an extraordinary 35 square miles. The miners face a 5-mile journey to get to the section currently being mined. It's a cramped and uncomfortable ride aboard one of the mine's small trains as the cars rattle their way through the maze of dark tunnels, following a network of rails that are now so busy they require traffic lights. First up is a monster machine known as a continuous miner. Armed with a 16-foot cutting drum, this ferocious beast chomps away at the seam, carving out a series of access tunnels. As it bores its way forward, it feeds the coal behind it to a crab-like loader and shuttle car. The continuous miner produces up to 5 tons of coal every minute, more than a miner in the 1920s produced in a whole day. But its job is actually to prepare the way for the real monster, the long-wall shearer. Armed with a set of teeth to put a Tyrannosaurus to shame, its cutting edge is over 1,000 feet long, and it can smash an amazing 50 tons of coal out of the seam every minute. Think about it. That's almost 1 ton of coal every second, enough to meet all the energy needs of an average household for 78 days. But there are 3 million tons of coal in this 13-foot high seam. Despite its ferocious appetite, it will still take 6 months of shuttling back and forth before it has finished digging it all out. Before the coal is fit for shipping, they first need to remove rock, soil, and contaminants, which account for up to 30% of the raw feed. So the material is fed via conveyor into the processing plant. To ensure it's all properly processed, it's first graded according to size. Next, to separate the coal from the waste rock, it's fed into this giant flotation tank. Because the rock is heavier than the coal, it sinks to the bottom where it can be removed while the coal floats to the surface. It's now soaking wet, so just like your home laundry, they load it into a spin dryer. This industrial dryer spins the coal at high speed until excess water is removed. This water is then fed into vast tanks, where the contaminants are removed before being disposed of as waste slurry. Meanwhile, the different-sized pieces of coal are recombined, crushed into a uniform mix, and fed into a giant hopper. Incredibly,
Just 15 minutes after entering the plant, it's ready for transport by rail. As they park beneath the hopper, a controller opens a chute to allow 6 tons of coal to fill each car. Once full, every train is able to transport over 10,000 tons of coal to power stations across North America. Thanks to some extraordinary coal crunching machines and the guys who labor 24/7 to keep them working, this essential resource keeps flowing to the world's power stations, and there's enough electricity to power the wheels of the modern world.